top programmer. His code is always perfect and bug free. I just don't know how he does it. This is a good Python joke. So, all of us will be like Tony or better than Tony, inshallah. So let's move on to the next one. So conditions in Python. The condition is a programming statement that compares things and tell us whether the criteria set by the comparison are either true, yes, or false, no. So that's the key thing to remember. जिसमें हम लोग conditions को compare करते हैं. For example, अगर किसी की age basically is more than 10, it's the condition is true. And if that is the case, is the value of the age variable greater than 10? If it is yes, then hair color is black equals black, which is another way of saying is the value of the hair color variable black. ये दो conditions अलग अलग हैं. क्या आपकी एज 10 से ज़्यादा है? Yes या no? अगर yes, तो फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल है क्या आपके बालों का कलर ब्लैक है? These are just like statements that we use. So we use symbols in Python called operators. Now these operators, they will remain the same. चाहे Python primer पढ़ रहे हो, चाहे अल्फा पढ़ें, बेटा पढ़ें, जितने आगे जो स्टेजेस आएंगी कोर्सेज की, और इवन जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तमाम चीज़ों में आएगा, ऑपरेटर्स हमारे यही रहेंगे. सो रिमेंबर दीज ऑपरेटर, दीज आर द की ऑपरेटर्स कंडीशन, जो कंडीशंस क्रिएट करते हैं इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस, बेसिकली लेट मी शो यू दोज थिंग्स. सो इक्वल्स टू के लिए हम लोग दो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू का साइन, एंड ग्रेटर देन का इज़ ग्रेटर देन, लेस देन का इज़ द इन्वर्टेड अदर वन ऑन इट. द ग्रेटर देन का जो है वो राइट साइड पे जाता है एरो, लेस देन का गोज ऑन द लेफ्ट साइड, greater than or equal to again, and then less than or equal to. So be sure to use a double equal sign when defining an equal to condition. That's the key thing. So please isko yaad rakhiyega. So be sure that you do that inshallah. So this is a greater than example. Agar age aapki 10 hai, if age is greater than 10, print you are too old for my jokes. And if age is 20, and if age is greater than 10, you're too old for my jokes. So this is like an example. Agar aapki age 10 है तो क्या होगा? There won't be anything. But if it's greater than 10, then you get then the program वो जो होगा वो prints करेगा statements. इसी तरह देखिएगा, याद रखिएगा कि जब हम machine learning, deep learning, AI में जाएंगे, यही Python के operators यूज़ हो रहे होंगे जो डिसाइड करेंगे कि हमें इस डेटा के साथ क्या करना चाहिए, इस डेटा के साथ क्या करना चाहिए, कौन सा हमें लॉगरिथम यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें आएंगी बाद में. बट रिमेंबर कि ऑपरेटर्स यही होंगे. इसलिए हमने जो प्राइमर का कोर्स डिज़ाइन इसलिए इस तरह से किया है कि इवन के छोटे बच्चे भी, आप यहाँ अगर ग्रेड 5 का बच्चा है या ग्रेड 2 या 3 का बच्चा है या ग्रेड 1 का बच्चा है, इसको पढ़ना भी अगर आता है, एंड इफ़ इज़ इनटू प्रोग्रामिंग, ही कैन डू दैट. So if he's good in reading, he can do that. Otherwise, grade 5 का जो बच्चा है, that's the minimum standard that we have defined कि पाकिस्तान में grade 5 के बच्चे, class 5 का जो बच्चा है वो तो कर ही सकता है programming, which is very very important. So let's move on inshallah. Equal to के लिए हमने कहा है कि भाई age equals to 10. If age is equals to 10, print you are too old for my jokes. That's a simple one, right? So you can try these statements and you can figure out कि किस तरह से क्या result आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. This is a very simple code. You have the code over there, just type it in your basically Jupyter notebook and you'll be able to find out कि कहाँ आपका result किस तरह से आ रहा है इंशाल्लाह. So try now also as an assignment. अभी तो primer है, primer के बाद alpha में आपके और beta में आपके assignment शुरू हो जाएंगे. So now for now मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जब बैठे हुए हों तो यही जो ऊपर प्रोग्राम था पीछे वाला, इसमें आप ये एज, इफ़ एज के बाद जो है आप ये तमाम स्टेटमेंट्स लगा के देखें कि क्या क्या आपका रिज़ल्ट मिलता है. आई वुड लाइक यू टू सी कि भाई उसमें आप जब इन ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है इंशाल्लाह. सो लेट्स सी. Age 12, a pig fell in the mud. Shh, it's a secret. Now this is a very good program. Let me demonstrate this in Jupyter inshallah to you. So let's try this inshallah. So want to hear a dirty joke? If age is equals to 12, age का parameter अगर ना आता है, if age is equals to 12, then print a pig fell in the mud. Else print it's a secret, right? So let's try कि age अभी 12 पे आ रही है तो the pig fell in the mud, right? So that's how it is going through.
Now, let me see if I manipulate this thing and say it's not 10. Nope. So you see, it will move on, else move on to the next statement. Because ये जो print है, ये इसके साथ का है. ठीक है? Else के बाद, it has a different statement. Right? So if and else, that's where if and else starts to separate the programming basically output. So यहाँ पर अब हम लोग पहले हम लोग if करके कर रहे थे, अब हम लोग else उसमें डाल दिया है, and then inshallah we will move on to other operators as well. But that's the key thing. So I want you to try these things, right, and see what do you get or not, so on and so forth, right? I use the wrong operator. Right? So you have to make sure that the operators आप use करें, they have to be from the right ones, as we see over here, right? So greater than or equals to sign is over here, less than equals to sign is over here. So what I would like you to do is try these examples at home with all the coding examples inshallah, ताकि आप practice करें, देखें कि आप कहाँ तक पहुँचना है inshallah, and then move on from there. Make sure कि आप तमाम operators को use करें. अगर आप किसी में कोई error मिलता है, come back to me and inshallah I will answer those questions. Jazakallah khair.